क्या ये बैकग्राउंड जो झाड़ पत्तियों का ये जरा सा हटाओ यार, मैं अभी तो मनाली नहीं गया हूँ। नहीं अभी मनाली नहीं जाना। क्या भाई? अबे हट गया। नहीं मेरे पे आ रहा अभी भी। कैसे भाई, कैसे हटाएं भाई इसे? भाई वो टुगेदर मोड को कैंसिल करके। हाँ परफेक्ट, हाँ अभी सही। हाँ ठीक है, शुरू करें। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। हेलो मिस्टर आकाश, क्या हाल चाल? लेडीज जेंटलमैन एंड अतुल मनोज। ये कौन है नया कैरेक्टर भाई तुम्हारी जिंदगी में? अरे बेस्ट फ्रेंड है यार, बुरा नहीं अरे मानेगा। तो this is my friend Abhishek Vyas. He was doing law with me, but he came to the sudden realization that law sucks, just like me. So we are both. He dropped out, but I am going to push through it through blood, sweat, and tear and cheating. Other than that, तुम्हें क्या बनना है? डायरेक्टर बनना है ना? हाँ यार, राइटर डायरेक्टर बनना है। एक ओरिजिनल तो ये कंसेप्ट था कि भाई कंप्लीट फिल्म मेकर बनना है। कंप्लीट फिल्म मेकर जो सिर्फ खाली लिखता नहीं है, या वो सिर्फ सिनेमाटोग्राफर नहीं होता है, सिर्फ डायरेक्टर नहीं होता है, वो सारी चीजें कर लेता है। वो शूट कर सकता है, वो एडिट कर सकता है, लिख सकता है, एक्ट कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है, वीएफएक्स मॉडल बना सकता है, अपनी स्टोरी बोर्डिंग कर सकता है। दैट्स अ कंप्लीट फिल्म मेकर। भाई इतना कैलिबर है किसी में, मतलब नहीं सब सब में कर है, ले। ज्यादा फिल्म मेकर ये सारी चीजें अपने लिए खुद करते हैं। मैं भी खुद करता हूँ, पिछले 3 साल से यही कर रहा हूँ। अच्छा, if I take the example of Christopher Nolan, हम्म। do you think he can play Christian Bale and Heath Ledger and मतलब all camera angles वो ठीक से करे और फिर हैंस जिमर का स्कोर करे? Do you think a filmmaker can do all this? I'll tell you what, there are different kinds of films and different kinds of setup. It all depends upon what you want to do. Again, Right, talking about Dark Knight, it's no relevance to a particular filmmaker. It's a fantasy. So you need people for fantasy, but there were films made for fantasy by one person alone. Take right, your fucking Walt Disney or anyone, as per right. se. They started out in a garage. They wrote themselves, they acted themselves, they did practical effects themselves. They used to shoot it, edit it on reels in Red Room. Right. तो मेरे ख्याल से शुरुआत तो इसी तरह से हुई है सिनेमा की। साउथ पार्क का भी मेरे ख्याल से यही हुआ है। They हर used तरह, to cut out कोई paper. भी फिल्म मेकर, आप अपनी प्रोफाइल बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, फिल्म मेकिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप डायरेक्टर बन रहे हो, सिनेमाटोग्राफर बन रहे हो, कोई भी आर्टिस्ट हो, पहली चीज आपके पास प्रोफाइल होनी चाहिए। प्रोफाइल कहाँ से आती है? आपको बनानी पड़ती है। आपको मतलब सुन के तो कोई भी बजट नहीं लगाने वाला है, कोई स्टूडियो नहीं लगाने वाला। अगर आप घर से एक नहीं अच्छा करने पाएगा, कोई रिस्क नहीं लेगा। तो आपको क्या खुद से ही बनाने से चालू करना होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम तो यही है ना कि जो फिल्म मेकर होगा, जो स्टार्ट कर रहा है, उसके पास एक्सपीरियंस भी नहीं होएगा, तो किसी के सच अ बिग रिस्क। किसी के पास नहीं। आप फिल्म स्कूल जाके भी कोई एक्सपीरियंस नहीं गेन कर रहे हो, फिल्म स्कूल से हटके भी नहीं कर रहे हो। मैं कोई पर्टिकुलर टारगेट नहीं कर रहा हूँ फिल्म स्कूल को, बट मेरा कहने का सेंस ये है कि आपको फिल्म स्कूल की जो मैंने एजुकेशन देख ली है, बल्कि मैंने फिल्म स्कूल भी अपना पढ़ते पढ़ते छोड़ दिया था बीच में। सो आई हैव ड्रॉप्ड आउट ऑफ माय फिल्म स्कूल आल्सो। राइट। तो सिनेरियो ऐसा था कि आप फिल्म स्कूल में जाते हो, इट द एजुकेशन गेट्स नैरोड डाउन। मतलब कॉलेज तो अल्टीमेटली इंडिया में हो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में, वो कॉलेज की तरह बिहेव ही करेगा। उस हाँ। पे स्कूल का या आर्ट स्कूल का टैग लगने से कुछ नहीं चेंज होगा। तो सबसे पहले कि एजुकेशन नैरो डाउन हो जाती है प्रोफेशन पे। आपको राइट। सिनेमाटोग्राफर बनना है, सिनेमाटोग्राफी वाला चूज करो, उस बैच के बच्चे के साथ बैठो। आप डायरेक्टर हो, उस बैच के साथ बैठो। मतलब पहला साल बेसिक्स ऑफ फिल्म मेकिंग, आपने सब चीज कर ली। क्या पसंद आए खाओ, जिसमें ज्यादा मार्क्स आ रखे हैं आपको वही मिलेगा। अगर आपको पसंद सिनेमाटोग्राफी की है और आपके मार्क्स ऐसे हैं कि आपको सिनेमाटोग्राफी नहीं मिल सकते, तो नहीं मिलेगी। सो इट्स मोर अबाउट द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू बीट यू डाउन टू हाउ गुड एन एम्प्लॉय यू आर। They are trying to categorize you या on the द basis of your इंडस्ट्री नीड्स marks. एम्प्लॉइज। यहाँ पे जो जो अपनी इंडस्ट्री थी, वहाँ पे एम्प्लॉइज मोस्टली इंडिपेंडेंट थे, अपने आप काम करते करते सीखे थे। कोई भी ट्रेंड एम्प्लॉय नहीं था जो सैलरी के लिए आना चाह रहा था, फन करना चाह रहा था काम के साथ। तो अभी लोग फन करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, अपने मजेदार चीजें बनाना चाहते हैं, अपना नाम चाहते हैं बड़े बड़े बैनर के साथ लगे जिसके अंडर है। बट अल्टीमेटली पीपल आर एम्प्लॉइज। बट
आजकल जैसे मतलब इंटरनेट का इतना बूम हुआ है दैट इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स आर राइजिंग कि यूट्यूब पे अपना वो प्रोफाइल खोले एंड मेक न्यू वीडियोस लाइक एपिक रैप बैटल एंड ऑल दैट शिट सो they don't have to go to like any media school or anything like that to get recognition. So I think this is a very nice approach that untalented मतलब unrecognized लोगों को they can use their talent हाँ which मतलब कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अच्छा प्लेटफॉर्म है। हर प्लेटफॉर्म की अपनी गाइडलाइंस है, अंडरस्टैंडिंग है, जिसके बेसिस पे जिनके पास जो अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स है, वो एल्गोरिथम को काम है। तो आप एक टाइम पे एंटरटेनमेंट और फन के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए काम करते हो, लेकिन फिर आपको लगता है पैसे की जरूरत है, हमें वो भी रीच चाहिए, वो रीच चाहिए, देन यू स्टार्ट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम एंड यार थिंग्स पैसे स्टार्ट तो जरूरी है फ्रॉम दैट टाइम यू स्टार्ट लूजिंग योर क्रिएटिविटी एंड योर क्रिएटिविटी चैनलाइजेस टू बिजनेस। commercial it's यार So creativity is still not independent at a stage where we want. Like in mainstream cinema, it's हम्म, based on service. ये demographic है, इनके लिए हमें ये फिल्म बनानी है। तो इसके साथ साथ मैं चाह रहा हूँ थोड़े बूढ़े लोग भी आ जाएं, थोड़े लेडीज भी आ जाए, इस एज की थोड़ी, इस एज की भी लेडीज आ जाए, और ऐसा कलेक्टिव बना करके, हाँ भाई अब मेरे को कोई स्क्रिप्ट ऐसी ढूंढ के दो, अच्छा कोई स्क्रिप्ट लेके आ गया, अच्छा इसमें ये चीज चेंज कर दो, हमें इन डेमोग्राफिक को रीच करना है। अच्छा नहीं, बॉलीवुड मूवी बनाओ आइटम सॉन्ग डाल दो तो अभी मैं एकदम तुम लोग को सबसे बड़ी पूरा एश्योरेंस दे देता हूँ कि मैट रीव्स ने बनाई है बैटमैन फिल्म आर रेटेड, लेकिन वार्नर ब्रदर्स उसे निकालेगा PG-13, और मेरे ख्याल से उसकी रेटिंग PG-13 आई भी है अभी वेनम पिछले के साथ भी यही हुआ था मेरे ख्याल से यही सभी सभी फिल्मों के साथ। सो हर फिल्म, वार्नर ब्रदर्स और जितने बड़े स्टूडियो, सबका काम है कि उनको डेमोग्राफिक्स को रीच करना है, सबको रीच नेटफ्लिक्स का वो करना। टारगेट तोड़ना है, फाड़ना है, उससे आगे बढ़ना है। हाँ। ढाई और सौ आजकल मिलियन चाइनीज के लिए इतना वो कर रहे हैं फेवर जस्ट टू it's all about subscribers, it's a race about subscribers, nothing else. राइट इट्स नॉट अबाउट क्रिएटिविटी। Ultimately it narrows down to that, and the public is still unknown to the content and hasn't gotten, they don't get used to the content that they should know, the life, the stories, the emotion that are Right, still right. left out on They table. don't experience it in a deeper level. It's like surface level कि आयरन मैन ऊपर से उड़ा है तो oh my god it's so cool. अच्छा, can By we the agree way, on the fact? I got into filmmaking because of Iron Man. Children my age were curious to become Iron Man, I was curious to make Iron Man. The Yeah, science, अरे till then it was good, but can we yeah. agree on the fact that till Endgame it was like the best franchise ever? Okay, uh, in my perspective. But now what they're doing is milking all the superheroes that they can. Basically, my friend, the thing is that they have this opportunity called multiverse, Right? and they can utilize their all the choices. Literally, Marvel ने पूरा हॉलीवुड यूटिलाइज कर लिया है। Hmm. जब वो Correct. कर लेगा, मुझे भी नहीं लगता कि उनके पास अगर स्टोरीज हुई भी तो वो बताना चाहेंगे, क्योंकि एक्टर्स रिपीट। बात ये है कि हम लोग एक रूटीन देख रहे हैं पिछले 12 साल से। हाँ. हम लोग फिल्म नहीं देख रहे, हम लोग रूटीन देख रहे हैं, Hmm. जिसमें बिल्कुल. स्टोरी टेंशंस खो गए हैं। Hmm. अब हम लोग को जब तक कुछ एक्सट्रीम नहीं होता, तब तक कोई इमोशन फील भी नहीं होता फिल्म में। हमने इतने तरह के मूव्स, इतने तरह की चीजें नए तरह से देख लिया है कि अब हम लोग को शॉक नहीं हो रहा है, अरे क्या हो गया, फीलिंग नहीं आ रही है। अरे यही लग एक्चुअली ना ये एक सॉर्ट ऑफ रिचुअल बन गया है कि एक मार्वल की मूवी आई है देन वी हैव टू सी इट। हाँ नहीं, वो तो है, क्योंकि लोग ये कंटिन्यूशन में चल रहा है। मान लो कि अगर मैं ब्रेकिंग बैड देख रहा हूँ, तो मैं 9 सीजन है और मैं 4 सीजन देख लूँ, पांचवा नहीं देखूँ, फिर छठे पे आ जाऊँ, तो गलत होगा। सही बात है। तो देखना है तो पूरा एक लेंथ में देखना है, देखना पूरा है, फिर देखना है। ओवरऑल कलेक्टिव डिसीजन सबको बनाना है। एवरीवन इज वेटिंग, कहाँ खत्म होता है, कहाँ जा रहा है। बट इट्स गेटिंग टू कॉम्प्लिकेटेड मतलब इवन लोकी। मार्वल डजंट नो वेयर दे आर गोइंग, दे जस्ट मेकिंग प्लान्स, बट वो देख रहे हैं कि कहाँ जाता है, लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। राइट, I राइट। thought the film was coming with some other characters. ये तो ये फिल्म का CG और VFX भी कंप्लीट नहीं हो रखा था। अभी रिसेंट न्यूज़ ये है कि फिल्म के CG और VFX कंप्लीट कर करके शॉट्स दोबारा से वापस मूवी को भेज रहे हैं। जो टोबी अच्छा। मैगवायर पोर्टल में से निकल के आ रहा, वो सीन भी वो ढंग से उसका CG नहीं था, काफी फ्लैट हो रखा था, उसमें डेप्थ नहीं थी। तो सारे सीन्स री एडिट करके इन्होंने वापस थिएटर्स में भेजे। सो इफ यू गो टू वॉच स्पाइडरमैन नो वे अगेन, इट विल बी अ डिफरेंट फिल्म नाउ।
Don't give Some any place, spoilers, please. yeah, it Spoilers. will be written at places right now if you go to watch it. Right. So But this marketing move of Tobey Maguire and all the other cast, that was it was, brilliant. I believe, it's my belief, I'm not saying कि तुम लोग जानते हो कि नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरा बिलीफ ये है, मैं जिस तरह से मार्केट और सिस्टम को देखता आ रहा हूँ, मेरे हिसाब हाँ. से ये सब चीजें ऑलरेडी या तो थी नहीं प्लान में, हम्म. बैकअप हर चीज का रहता है, बट इन लोगों को पता नहीं था कि पब्लिक, क्योंकि बीच में मार्वल फैंस ने एक मैंडेट चला दिया था और हम्म. पिटिशन थी कि इफ यू डोंट गेट टू सी टोबी मैguire और एंड्रयू गारफील्ड in this हम्म. film, in the last takeout of Tom Holland, we are not watching this Marvel film. We are abandoning Spider-Man 3. So I They are think this going to abandon the complete, whole Marvel series. yeah. So literally they are going after this because उनको लगा कि कहीं abandon ना कर दे अगर नहीं आए तो, और ये लास्ट मोमेंट पे CGI और VFX फिल्म रिलीज होने के बाद करके देना पड़ रहा है और कहेगा कि वर्क फ्रॉम होम था। तो अरे. ये मेरा बिलीफ है, क्योंकि मार्केट, क्योंकि स्टूडियोज आर दिस फक्ड अप दैट दे विल डू टू गेट मनी इवन इफ इट्स लास्ट, जैसे कि जस्टिस लीग उठा लो 2017 की, वो 6 महीने के अंदर पूरी फिल्म को रगड़ धो के पीट के 4 घंटे की फिल्म को बनाया, क्या बनाया सिर्फ 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, अवेंजर्स के डायरेक्टर को बुला करके। सो मैं हम्म. ये कह रहा हूँ कि स्टूडियोज आर मेंट टू डू ऑल दिस फक्ड अप स्टफ इन लास्ट मोमेंट। Sorry to interrupt. Just see the difference. Avengers का director and Justice League का director, both of them are same, No, and but the both of pressure them. from studio, the producers Yeah, that, that's the yeah, thing. the guys only know how to count numbers of money, but they don't know how to count number of people. How are they coming to this? Like एक Because ओरिजिनलिटी थी उसकी कि सब लोगों की कंटेंट की किस लिए आ रहे हैं, लोग क्या देखने आ रहे हैं, हर हाँ, किसी मतलब के अपने साथ ये फेवरेट लोग टाइप खिलवाड़ करते हैं, आइकॉनिक स्टोरी कैरेक्टर्स देखने बिगाड़ते आ रहे हैं, पब्लिसिटी के साथ खेलते हैं, और फिर वो पैसे के चक्कर में, और फिर बाद में आकर के क्या आता है, इट्स अ प्रोजेक्ट दैट नॉट एवरीवन इज सेटिस्फाइड विद। See, the thing is, they know they cannot compete with Marvel at this stage. So, what this their strategy is just to milk money out of our Marvel is nostalgic juicing up characters. their characters. I think this is a stage. I think one more Avenger film that they will make around 2024 or 2025. I Right? think के बाद पब्लिक खुद बोर हो जाएगी अगले 5 साल और ये रूटीन देख के। बबल है और It क्या है? has to break at some point. It will break. ये नेचुरल है, ये काफी नेचुरल है, किसी भी कंटेंट के साथ होना है, खाली कॉमिक बुक मूवीज नहीं है, ये सबके You know, साथ I've होना है, हर के साथ। I've read this theory that ये जो सुपर हीरो का जॉनरा अभी फेम में आया है ना, it's just because of 9/11 because we needed a ray of hope to. नहीं यार, दैट इज बियॉन्ड, बिकॉज अगर आज के टाइम पे देखो, एयरपोर्ट इज सिक्योरर देन अ ज्वेलरी शॉप। That's just an illusion of security, I'm telling you. नो जिसको नो व्हाटएवर, बट वो चीज क्यों, एक एयरपोर्ट को इतनी सिक्योरिटी क्यों, बट एक ज्वेलरी शॉप को क्यों नहीं, क्योंकि वहां तो इतना सारा गोल्ड है, वहां से इतनी जल्दी चोरी हो जाती है, बट एयरपोर्ट से नहीं होती। बात ये है कि जो हम लोग को एक जो डर बैठा हुआ है, डर जो कि जो लोगों हो का चुका है, हो चुका है, तो अब that वो is सीन ऐसे है कि वो सिचुएशन में इंसान क्या ही कर सकता है, बिलीव कर सकता है, और उसके बिल्कुल. साथ। अब आज के टाइम में जिस बिलीफ सिस्टम में हम हैं, उसमें तो हमें मानना पड़ेगा भाई हमारे ऊपर खतरा टेररिज्म है, तो उससे बड़ी क्या होप हो सकती है, कोई नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। एक बुक है, it's a very interesting book, it's known as Black Swan. So हम्म every scientist in the world हम्म theorizes that there are only white swans, and then out of nowhere a black swan appears, and हम्म। सारे साइंटिस्ट की चुद गई because their prediction was false. Yeah, So it is. this is what happens, matlab, in everything. Like when a new event that you do not even know is going to happen happens, then your whole perspective about life changes कि हम्म। now इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि अब ये भी हो सकता है कि मतलब प्लेन्स आ सकते हैं और टावर पे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. So बात this ऐसी is कि very या interesting. it's human imagination, it's creativity, even if you're destroying something, it's your creativity how you want to destroy.
Right. तो ही फाउंड इट वेरी जो भी था, मैं तो ज्यादा उस पर कमेंट नहीं करूंगा। अगर अगर आपको कुछ भी करना है, आप कुछ अच्छा कर रहे हो चाहे बुरा कर रहे हो, अल्टीमेटली ह्यूमन इज अ क्रिएटिव एनिमल। Yeah, definitely. How he uses science and art all together to find a new way of doing something that no one has ever done. Right. Ultimately, it narrows it down to how a human psychology works, what a human mind is. See, there are so many human beings on this planet. We cannot even predict our You own cannot, self. but there are certain outlines that you can cover up, and that might help you. You don't have to go and reach out to every human. You cannot. That's the Right. thing. Though the need is to reach out to everyone, but no one can. So, what you can do, either collect them all in one group, unify this system into one thing, and run it like some sort of, simulation. Maybe that might help you to bring an order. क्योंकि एक रिलीजन वो कह रहा है, वो आइडियोलॉजी वो कह रही है, वो फिलोसफर वो कह रहा है, तो वो लोग अलग बढ़ गए, वो लोग अलग बढ़ गए, वो लोग अलग बढ़ गए। अब क्या है, सबको ग्रोथ चाहिए, सबको आगे बढ़ना है लाइफ में, सबको टाइम ट्रैवल देखना है, सबको मल्टीवर्स के बारे में जानना है, सबको एलियंस के बारे में जानना है, कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं इतनी सारी। क्या करेंगे? चलो भाई, सबको एक मैनर में ऐसी चीजों को, ऐसे कंटेंट का ऐसा एल्गोरिथम बना दो कि सब लोग एक जगह खींचते हुए चले आ जाए इन्फॉर्मेशन के पीछे पीछे। साउथ पार्क में एक एपिसोड था। डू यू वॉच साउथ पार्क? टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट वॉच एनीथिंग। अच्छा, you watch everything. Do I watch, know. I do watch stuff. I haven't watched South Park yet. अच्छा, तो Family, there was the protagonist that went into the future, and उसमें क्या हुआ था कि all religions were eradicated, but different groups of people still fought with each other. And yeah, end में third act में ये बताया why they fought with each other was because their names were different. Like the names of the group were different. Atheist Alliance, Unified Alliance. So basically, my point is that people are going to find ways to induce violence, no matter whether it be religion, whether it be this stupid shit. So that is something that cannot be changed. I would Only suggest law can to prevent it. people around if they could read a four series book by William Gibson. Okay. It's called Count Zero, Neuromancer. These there are two more books, at least. So it's a series of book, four series of book. If you Okay. read it, it will help you out with things that you want to. And if you have to connect it even more, then go to Socrates. And if you want even more connection, then read Homer's work, that is through poems and stories in Iliad or Odyssey. These are the Right. books that you can read. That might Those are pretty lengthy book, though. I would suggest there are so many parts. If I have a combination of those that has at least it's a complete. If I take all the parts together, it's like 8,000 or 9,000 pages of a book, each book. But Enough if about philosophy, Abhishek. Let's talk that's about not you. philosophy, that's not philosophy. That's actually, it has details about Greek mythology, and it has everything about it, Yeah, मतलब, and basically talks about a structure, a layout. right. That the thing is, we read stories and we get very confrontational. We don't try to see it in a layout and try to apply it. The problem Yeah, is, we because we even are do very we do close. understand we are bad at applying things. Yeah, it is very hard. Acha, Yeah, let's talk about you. yeah. No, things are there. Like, for me, a morning starts with a sonnet. Okay. What's A that? sonnet. So Shakespeare has written poems and proses that are known as sonnets. People know in general. You So simple, the thing is, it's poem about life, love, right? and war and everything. It has everything, but mostly about love. It's good. It's Right. good for actors to read it if they want to learn more about stage acting and everything. Sonnets help them a lot. So yeah, Right. even I read them. And to be honest, the I was I was never into reading. You know me.
I was never a Yeah, person to read. obviously. I was a completely different personality back then. Hmm. I was not what I am right now. But that Yeah, doesn't mean you I'm have dead. But transformed tremendously. I don't know. I'm still the same maybe. But yeah, the thing is, what you read, what you are chewing, what you're listening, what you're smelling matters. It does. It really How does. you're treating your senses matters. So if you want to believe and if you imagine it about something that is happening to you and to your life, Right. it will start happening. It will. Some people call it the power of manifestation. I just say it's algorithm and it's our human mind that, you know, if I have to make a film Right. about another film on moon, like कितनी सारी फिल्म बन चुकी है मून के ऊपर, तो मुझे भी एक फिल्म बनानी है मून के ऊपर. तो मैंने Hmm. एक एनवायरनमेंट बना दिया मून का, बैठ गया उसके Hmm. आसपास. मैं उसे ब्लैक एंड व्हाइट में निकालूं या कैसे भी निकाल लूं, आज तो पूरी तरह से पॉसिबिलिटी कि मैं रियल बता सकता हूँ मून पे पहुंच गया हूं. Hmm. एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब आपको ये भी नहीं प्रूफ करना पड़ेगा कि आप एस्ट्रोनॉमी आपने पढ़ी है कि नहीं, या आप एस्ट्रोनॉट हो भी या नहीं. Hmm. क्योंकि हर कोई उस चीज को इतना, आज के टाइम पे ऐसे ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस होने वाली हैं, स्पेशली अगर तुम उठा लो अनरियल इंजन 5 को, Hmm. जो अभी नया आया है. Hmm. Try to Hmm. connect with several other points that I'm trying to say. I'm just throwing out these points. Right. You have to connect those dots. You're getting off topic. Adding to this, your mindset wala, there is a psychological concept known as self-fulfilling prophecy. If I Hmm. think कि मैं गरीब रहूंगा, मेरे को पैसे नहीं मिलेंगे, तो Hmm. that is just what is going to happen with me. I'm not going to take any steps or actions to increase Yeah. my wealth. So my why I am talking about all of this, why I'm trying to bring this out in this conversation. The thing is, as a filmmaker right now, and as and as majority of storytellers that are involved right now, Yeah, who make films, who write stories, who write books, have this basic understanding that they want to convey, but no one can directly do that sure. because we are not ahead of our time. People are not ahead of the time. Like they're not ready to take information. Right. If people have seen a new film called Don't Look Up, okay, so कुछ चीजें information को urgency के साथ ही देनी पड़ती है. आप उनको मीठा नहीं बना सकते हर बार. अभिषेक तुम अपने बारे में तो बताओ हमने पूरी फिलॉसफी झाड़ ली हाँ, मेरे बारे में. टेल मी मेरे योर पर्पस योर फिलॉसफी Oh, okay. So if you have a purpose, you'll be part of a category. So I have no purpose and I don't belong to any category. That's the thing right now. ओके I am just like a water in this in life right now. This is my inspiration. Water is my inspiration. लिविंग इन द मोमेंट No, no, just be like water. Just जो जैसा चल रहा है वैसे बन जाओ. अच्छा Adapt. सो मतलब डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर द फ्यूचर लाइक एडिशनल डायरेक्टर और Stories were always the plan. राइट Think stories were always the plan. That is on, and it has gotten way too deeper in a sense that the the more you get into filmmaking, you realize how storytelling is done. You'll realize you cannot be direct. डू यू माइंड इफ आई शेयर योर स्टोरीज इन माय लिंक which I'm going to post. So अभी तो नहीं यार, अभी तो नहीं. अभी तो stories that are registered with SWA and I cannot just give it out like that. Right, right. Then yeah, so some of them are with some production Anything houses. informal that you write in your pastime? I've been writing a script recently. I haven't registered it yet, but I Yeah. am writing right now. It's named as. Let me show you.
It's pretty Yeah. nice. And Yeah. writing it based on. So I start with writing with my hands. I don't type. I don't like to type. Right. Stories must be written. So yeah, things are pretty much not the same, but the same. More the words, the more the play. Right. So I'm writing the story called The Summer of Dog Days. Okay. Summer of Dog the Summer of Dog Days is a very famous term. A term utilized, sometimes underutilized and sometimes overutilized throughout What does centuries, it even mean? more than that. The Summer of Dog Days comes back from Greek times. Like people in back in Greece, in at the time when they were gods and kingship and everything. Those motherfuckers knew everything. The thing is, it's a combination of information throughout the world. If you combine it together, you'll get to know. Right. Nothing separately knows everything. Like that part or that corner of the world has witnessed something is not something same that they'll witness on the other part of the world. It's Okay. big enough to establish different people through Hmm. so many centuries. How it is not possible to address different events that have happened and just agree with it and move on. Hmm. लाइक नहीं, अगर मेरा ये वाला मेरे माइथोलॉजी ने ये बताया है तो यही हुआ होगा दुनिया के साथ, नहीं, तुम्हारी माइथोलॉजी ने जो बताया तुम्हारी एरिया में हुआ बाबा, उस Oh. और जगह पे तो कुछ और हुआ ना, तो उन लोग की चीज भी सुन लो, और जब वो कंबाइन करोगे एक जगह कलेक्टिव बनाओगे तो समझ आएगा कि अरे नहीं, अपने ही कट रहा था ये तो इतने टाइम से. So these are the facts, these are the understanding that I keep with myself to write things. Right. Yeah, These are you showed me that superhero wala, that Frozen Man wala. At least you can share that. okay. So the thing is, I've been writing this comic universe. I've been trying Yeah. to make my own comic book, but not a superhero thing. So the thing is, the story itself is talking about superheroes for the four or five stories. Yeah. And then storytelling itself changes in a manner that it says it's these are not superheroes, and they don't even address themselves. People mistake them for superheroes. Hmm. Ultimately these are just elements of nature. So these stories were not about some bald guy came from space, started breaking people's ass, Right. मतलब Right. तोड़ने बैठ गए लोगों की. नहीं, वैसा कुछ नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है. It's a complete mess up between nature and its laws, the laws of physics, laws of nature, how they are in aggression, or are they against us, or they with us, or how does this whole system works actually, where does this all come from, and how do these people exist who have powers like superhero but are not superheroes. So it's a complete 25 stories and a set of it that is interconnected and doesn't go more than 25, doesn't go less than 25. These are my own personal reasons. So yeah, I've been working on them The for a long reason that time. I'm asking you this is my best friend, she's also into collaboration because she wants to quit her job. Oh. So I think you would be the perfect candidate to write short stories or novel. I mean, if you got the time. Oh, I am looking for people who can write, because there are certain female characters that I. So when I write stories, I literally go into method. There is method acting where you Right. actually look like That is most. That yeah, is the that's my most. method of writing. So if I have to write something about a lady, I think only a lady can write. It's not my Right. mandate for that. Only lady should write Right. a lady story. Even I can write, but I Right. need more authenticity. How I'm looking for a lady who is crazy enough, you know, She is crazy. see in that manner, see the world in that glass, is ready to see the world through my Right. glasses, and then write her own imagination with that. So I Acha, have these. So out of 25, I have 14 stories that I'm working on right now. 14 of them, damn. and it's a flow So chart I what? have for each of them. When do you think, at what age do you think you would be capable of becoming a director?
See, there is no age. There are people who have been working for 20, 30 years, haven't got the job of directing yet. And there are people who just That's came, that. started directing in the age of 21 and 22. So there Hmm. is nothing fixed. It all depends upon you, your maturity, and how good of a storyteller you are, that you can convert those actions in your mind into real life audio and visual. तो आपकी जो होता है कि सेंसेस हैं कि आपके दिमाग में जो आपके आइडियाज है वो अलग वे में एडिट होके चलते हैं, और जब आप प्रैक्टिकल उन्हें करने चलते हैं तो अलग वे में निकल के आते हैं. सो व्हेन यू Unfortunately, luck also plays a part. No, 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 first of all, remember, there is nothing like luck. Never ever wish anyone good luck or anything. I don't take that in general, and I don't give people that good luck or something. I don't give them best इलॉन wishes. मस्क के बेटे को देखा है? वो तो प्लेन का कोई पीछे का कोड लगा के उसका नाम रखा है कुछ ऐसे ही, फ्लाइट नेम है वो तो. हाँ, तो he is like one of the luckiest person. No, he's not. How do you know that he's lucky? Dude, do I seriously need to answer that question? Dude, you are just looking at a bank balance and a person's persona. क्या पता उसके फादर ने आगे जाके उसे टाइम नहीं दिया और वो इतना डिस्टर्ब बच्चा हो जाए कि वो जाके पूरी दुनिया की माँ बहन करके, तब तो उसको लकी यार बोलोगे. ऐसे तो रिक्शा वाले के बच्चे भी हाँ, तो वो लोग कोई आईपीएस टाइम बन रखा है, कोई आईएएस बन रखा है, पब्लिक सर्विस में घुस जाता है. ये तो स्टोरी सबको सारे. सबको पता है. सारे भिंडी वाले के बच्चे सब आईएएस बन चुके हैं. ये तो स्टोरी बहुत बार मैं सुन चुका. और यार मैं बोलूंगा फिर तू बोलेगा कि इसके साथ ये हुआ है, उसके साथ ये हुआ है. Shit happens with everyone, but some people are better off. That's my see, point. but you can't do anything about it if they got a better life, You because can't. You can't. do anything about it. But you can focus on yourself to at least make it better, at least thinking about someone got. Exactly. Exactly. You can be the best version of yourself. Yeah, that thing is essentially just, it has just become a line. As I said, No, it's not a people line. do no, people understand things but they don't apply well. That is why you have to be consistent with your goals each and every day to become the best person. If you just throw it as a line, एकदम. then it's just bullshit. बिल्कुल. I've seen you grow so much tremendously. Like I remember you from the days of amity with that chick I'm not going to name. So you hung out with her What and are you that? Like, it was a thing. Everyone were there in their young it was a time. phase, man. It was a Yeah, like, what were we doing? Like, we were just doing anything that we felt it was right according to the time, whatever we felt was right, or we how had we. no direction No, no, we just had fantasies and we were running to them without, like, you had a without fantasy, executing but it. there is no way to it. But you're just. Exactly. We wanted to be the president of United States, but we were not courageous enough to run for election. See, if you want to say someone that who has a good luck, I Right. don't believe that part. Now look at Dwayne Johnson. What has he done? He might even run for the president. And the biggest example that Donald Trump has created, that कोई भी president के लिए जा सकता. अब तो ये बात सच हो गई है. भाई कान्या वेस्ट नहीं भाई, मैं छोड़ नहीं, नहीं, दूंगा कोई भी चलेगा. धरती. जब डोनाल्ड ट्रंप जा सकता है तो कान्ये वेस्ट क्यों नहीं जा सकता, और फिर ड्वेन जॉनसन क्यों नहीं जा सकता है, और फिर पॉलिटिकल फिगर्स ही खत्म हो जाएंगे, और फिर उसके बाद बचा क्या. See, now coming back to the thing of luck. Dwayne Johnson के genetics, Dwayne Johnson के steroids. एंड ही इज नॉट इवन फ्रॉम यूएसए. इट्स अ ड्रीम एनी किड्स ड्रीम आउटसाइड यूएसए हैज टू चल यार यूएसए के प्रेसिडेंट बन जाता. अरे अपनी कंट्री का तो बन जा. And it's So not an easy job, yeah, man. it's so to be honest, it's just people wrestling bonus to the ground. पहले तो ये बताओ यार, when are you coming to Delhi? हाँ,
मैं तो यार अभी मैं खुद कोविड लेके बैठा हूँ. दिस इज मी राइट नाउ. आई एम कोविड पॉजिटिव. सो I'll be, as soon as I get a negative report and I get complete, clean up of this house, then I might be able to leave. Even I'm getting kicked out. Yeah, even I have to shift. I'm saying shift by the end of this month. My owner has तो given me a notice मतलब board. Gotta leave. हाँ तो Don't. I'll buy a PG, I'll rent a PG so you can accommodate with me. No, but And I'm living in Mumbai only, dude. sorry, I'm living in Mumbai only. भाई थोड़ी दिन के लिए तो आ सकता है, ये मैं अभी मेरे कॉन्ट्रैक्ट है मुंबई मौका के मेरे साथ. को नहीं नहीं मेरे को कुछ जगह कुछ मीटिंग वीटिंग है कुछ और भी करने काम इधर. हमारे साथ भी कुछ और लोग हैं जो उधर पॉडकास्ट वगैरह चालू कर रहे हैं आजकल. पॉडकास्ट पीपल आर लविंग इट. तो भाई यू अभी. आर द स्टार गेस्ट हर पॉडकास्ट के लिए. अरे यार ये सब अभी तो पहला सबका होता है एक्सपीरियंस. मैं भी एक्सपीरियंस ले रहा हूँ. यार बट I've been gravitating towards spirituality lately. Yeah, you see, my friend, you can gravitate towards anything. You can try anything, you can learn anything, but you cannot become that. Like तू spirituality कर रहा है, तू बुद्धा नहीं बन जाएगा. नहीं बुद्धा नहीं बनूंगा बट एटलीस्ट आई कैन हैव सम reason to live. That may sound pessimistic, but Mm. I some mean, you have the reason to live. You have yourself. You have your family. Though I don't no, think no, so. no, no, not like Spirituality that. What I meant to say is is that a purpose. हाँ कि मतलब why is this life given to me? Yeah, So I need answers for that. I think you should just read more than and read something different. I'll help you out with this maybe if you let me. You just help me score. I'll I'll let you know all the answers of the universe. It's not about scoring, my friend. Scoring is a different deal, but what I'm trying to tell you is score some books. Score some books that are worth reading and they actually lead you with certain information. Dude, So, for the past 1 year, I've been reading a psychology book every yeah, day. psychology is, again, I would say, don't quote me, but majority of people who write books on psychology are just mandating. हाँ, they are ये अपने fixated. अपने experiences है. I cannot apply that to myself completely saying कि ये इंसान सही बोल रहा है. Hmm, I cannot believe on a psychology book. I cannot believe on a psychologist because right. अभी पूरी तरह से एक्सप्लोरेशन हुआ ही नहीं है. ये डेवलपिंग स्टेज पे ये साइंस खुद ही. सो मैं इस चीज को अभी पूरी तरह से बिलीव नहीं कर सकता हूँ. बट आई take my, I just take figments from different places, combine them, that works for me. यार ये बताओ अभिषेक, Hmm. first when we were little children, हम टेरेस पे बैठते थे. We used to look up at the stars Hmm. and count like there were 100, 200, I never counted. 300. अरे सुन सुन ना बेंचो. हाँ. तो ठीक है, we reached till 1000. Hmm. Okay, then we googled and we figured out that there are millions of stars, Hmm. right? And then we realized that there are billions of galaxies. How insignificant are we compared to the rest of the world, I'll tell to you this about. indifferent universe? I'll tell you one very simple thing through filmmaking only. Satyajit Ray, if you watch his film, his cinema, his work, it's Hmm. a whole another thing. So the thing is, people are so curious about Netflix and everything. Try watching some movie shit also. Movie is a good application, I think. It has all the Indian filmmakers, like actual Indian filmmakers. Hindi cinema वहाँ है. एक Hmm. फ्रेंड. तो मैं कहूँगा कि आप उस पर देखें जरा कुछ हिंदी सिनेमा. उसमें सबसे खास चीज मुझे लगती है सत्यजीत रे की हाउ पोएटिकली ही फाइंड्स लाइफ. लाइक उसकी स्टोरीज में बात ये करता है सत्यजीत रे कि भाई डे एंड नाइट
water and fire, है ना? Hmm. These are poems. These are poetic devices in nature itself. So things that are possible, two things are possible at the same time. That is called gray area. He talks about gray area. That is, you are significant yet insignificant. So basically, you mean to say is that we are significant for ourselves, even though the universe Again, does not it's consider us all about significant. self. It's all about self. The thing is, you you क्या बोलते हैं, खुद को ऑक्सीजन जब मिल जाएगा तो दूसरों को हेल्प करने की भी एनर्जी रहेगी. Hmm. इट्स नॉट अबाउट कि पहले खुद को सांस दो, जरूरी होता है नहीं. उसका मतलब ये होता है कि जब तुम्हारे पास सांस होगी, सो बॉडी विल बिल्ड enough blood flow for you to move forward and help someone else. And what about the fact that हमें पहले लगता था कि हम सैड है, हम हैप्पी है, तो मतलब these are just surface level feelings. But If you now, understand maths, you'll understand emotions. It's just like fucking board mass. just hear Just me board out. mass. It's not word mass. Board mass of emotions. सो किसी को लगता था सैड है तो ठीक है, इसको मूवी दिखा दो खुश हो जाएगा. बट नाउ Hmm. वी रियलाइज कि सैडनेस कम्स फ्रॉम ट्रॉमा, कम्स फ्रॉम a lot of childhood abuse, neglect. Happiness comes from joy, ecstasy. So there have been so many new findings that older generations were not able to comprehend. So, do you think that the life we are living has become much, much more complex to grasp? Life is not complex to grasp. It's just way too many people and way too many different thoughts. Imagine you have a different life going on. तेरी लाइफ की स्टोरी कुछ अलग चल रही है, मेरी लाइफ की स्टोरी अलग चल रही है. Hmm. बट इस टाइम पे तू और मैं जो टोटल सम है इमोशन का, वो एक ही फील कर रहे हैं. क्या है? सैड है. अगर है तो सैड है. सो द सम ऑफ फीलिंग इज सेम, बट द डिटेल्स आर डिफरेंट. लाइक हर चीज कहीं से भी आ रही हो, कोई भी स्ट्रीम आ रही हो, लेकिन सब बह रहा है एक ही जगह से. Hmm. सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कि यार उसकी लाइफ में ये चल रहा है, उसकी लाइफ में ये चल रहा है, बट हम लोग अल्टीमेटली फील क्या कर रहे हैं? खाली सैड. सैड से ज्यादा कोई और वर्ड नहीं बोल सकते हम लोग. Hmm. थोड़े और सिनोनिम्स, एडजेक्टिव्स ऐड कर लो, डिप्रेस कह Hmm. लो, सब कह लो, लेकिन अल्टीमेट वर्ड क्या है? सैड है वो. सो इट्स अ सम ऑफ इमोशन that is happening. So if something good is happening in world, everything is fine. So if no matter what your storyline is, ultimately you will be feeling happy. हाँ चल ठीक है, सब सही है यार. हाँ सेंसेक्स सही चल रहा है, पैसे सही चल रहे हैं, इकोनॉमिक्स सही है. हाँ चल ठीक है, दुनिया भी सही है. हाँ तो दुनिया भी सही है. तो वैसे ही एंड व्हेन सीन यू है. आर सैड, डिप्रेशन में है, हाँ. इकोनॉमी, मोदी And how चूतिया है. it all is connected to these, because when you write a story, when I write a story, when I'm writing a comic world, I need to राइट. create a world building is important. आप किस दुनिया में उस स्टोरी को बना रहे. So राइट. world वर्ल्ड consists of बिल्डिंग इज रियली. economics, sociology, physiology, psychology, सबका combination होता है. That's how you build a world. That's how you build a world, and then you write a story. That's how it is. That's how it's a construct. It's a राइट. composition. राइट. ठीक है. एक फ्रेम में मुझे क्या चीज दिख रही है? तो सामने एक वे प्रोटीन का डब्बा है, एक स्पीकर है, एक आईपैड है, बस. अब इससे मुझे क्या समझ आ रहा है? बट ये मेरा एनवायरनमेंट है. आई एम गेटिंग योर पॉइंट. सो इट्स अगेन, बात अभी फुल सर्कल कहाँ है? जो मैंने शुरुआत में एक चीज बोली थी, एनवायरनमेंट मैटर्स. कहाँ पे हम लोग, कैसे है, क्या आसपास चीजें हैं, उसके कंपोनेंट्स के, एनवायरनमेंट के. दैट्स हाउ आवर माइंड इज. व्हाट you call it manifesting power or whatever. If you get the choice to live in nature, हम्म. just in a cabin with your loved one, okay, हम्म. in a cabin with a हम्म. rifle to hunt animals and just grow crops,
for the rest of your life, Hmm. would you do it? See, I'll tell you a very simple idea about myself. Hmm. That is, मैं जैसा शुरू में बोला, पानी वाला सिचुएशन है। अगर दुनिया में सब खत्म हो गया और सब लोग बो स्टिक से और बो एंड एरो से वापस लड़ना चालू कर देंगे, मैं भी पत्थर लेके दौड़ रहा हूँ लोग। हम्म। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो मेरे हाथ में भी मशीन गन होगी। भाई आंसर क्या है क्वेश्चन का? लेकिन मैं वो वाला आदमी नहीं हूँ, मैं कैमरा लेके भागता हूँ भाई। चाहे कोई पत्थर लेके मार रहा हो, चाहे कोई बंदूक लेके मार रहा हो, लेकिन मैं कैमरा लेके भागूंगा हमेशा। तो अभी भाई अभिषेक भाई तू जा रहे है मतलब डायरेक्ट करने? अभी मैं एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ जिसको मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ। मैं अभी प्रोड्यूसर से बात चल रही है फाइनेंस के रिगार्डिंग, बट देखते हैं। अभी लाइफ में कुछ पता नहीं, सब देख रहे हैं हम लोग। मेरे पास एक स्टोरी भी नहीं है, मेरे पास है इतनी कि मैं सबको करना चाहता हूँ एक साथ। लाइक इतनी सारी हैं कि मुझे समझ आ रहा है कितनी अपनी लाइफ में जीते जितनी डायरेक्ट कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि है मेरे पास स्टोरी तो बहुत सारी सही में। टू बी ऑनेस्ट, आई नॉट, ऐसा मैं खींचने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट एक्चुअल में है मेरे आई पास। गेट इट। कॉमिक यूनिवर्स की 25 स्टोरीज उठा लो, मेरे पास 4 पार्ट के ग्राफिक नॉवेल्स हैं, प्लस मेरे पास उसके अलावा 84 और प्लॉट्स हैं जिनको मैंने अभी तक से हाथ नहीं लगाया है, जिनको मैंने खाली लिख लिख करके एक एक पेज, दो दो पेज छोड़ा हुआ है, और उनका पूरा कंसेप्ट, पूरा आइडिया करके लिखा हुआ, बट उनको सिर्फ अनफोल्ड करना है as I sit and research and start writing about them. भाई So घर भी मेरे तो को, चलाना है। I have just created a setup that I can utilize. मेरे से कोई भी आगे कुछ भी बोले, किसी भी जोन की स्टोरी चाहिए, किसी भी मूड की स्टोरी चाहिए, किसी भी जॉनर के हिसाब से, हम्म। I just have to go through all those stories and So what if you do one thing like I was talking about my friend ना अभी, hmm. so you Hmm. collaborate, she writes some stories, you write some stories, and short stories में कलेक्ट करके बेच दो, रॉयल्टी मिलती रहेगी, then you focus on something else that you enjoy, and हाँ, मतलब I वो तो प्रोसेस, वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इट्स नॉट दैट इजी, इट्स नॉट जस्ट दैट्स हाउ इट गोज, बिकॉज एज अ क्रिएटिव एंड एज अ क्रिएटिव प्रोसेस, अब वही बात आती है पर्पस की। व्हाट डू यू वांट टू डू विद दैट स्टोरी, एंड इट शुड कम इन अ मर्जर। लाइक सामने वाले का एम कुछ अलग हो सकता है उसी सेम स्टोरी के साथ, मेरा एम कुछ और हो सकता है उसी स्टोरी के तो साथ। ऐसा कर सकते हैं ना कि There is a also middle ground. It's the first thing, the collaboration happens when these two people meet and talk. So the thing is, तो I'll when I arrange discuss your meeting. friend about this idea, about what she wants to do, I need to know what she wants to do, what's in her mind, because I am very clear of what I want to do with these stories and what I Right, want to do with these characters. What does she want to do? What does she want in life? So right. उसके साथ ही there's a different thing. Like if I talk to you, Akash, if I have to work with you, if I have to make a podcast with you, Hmm. we find a common ground with each other. Right. Because if I it won't be possible, हम दोनों अजय देवगन नहीं है, हाँ। दो बाइक की सवारी, दो बोट की सवारी, दो घोड़े की सवारी करेंगे, और पॉसिबल भी नहीं है, रियल लाइफ में मजाक बन जाएगा। नहीं इतना स्मार्ट तो है हम। नहीं, तो वही चीज, तो अपने को एक मिडिल ग्राउंड हमेशा हर चीज का ढूंढना होता है तो कि आई ऑब्जेक्ट। मैं उसको कॉन्फ्रेंस पे ऐड कर दूंगा शाम को, ठीक है? विल हैव अ चैट। गेटिंग माय पॉइंट? डन डन डन। है ना? लेट्स मूव अप, लेट्स डू समथिंग विद आवर लाइव्स, एंड इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू। लेट्स थैंक मीट। यू। तो काफी टाइम से तुझसे मैं बात भी नहीं हो पाई है, बहुत टाइम से तुझसे मिला भी अब नहीं तू ये बता दिल्ली कब आ रहा है? हूँ। मोस्ट प्रोबेबली मेरे चांसेस बन रहे हैं शायद मार्च वार्च में आने के बन रहे हैं। मार्च की ठीक। प्लानिंग है, होली से पहले मैं शायद आ रहा हूँ। ठीक है भाई। तो पक्के चांसेस है, लेकिन अगर उससे पहले कुछ पॉसिबिलिटी बनी, क्योंकि घर में भी कुछ लोग बीमार हैं, और मेरे, हाँ, हम्म। फैमिली में कुछ लोग हैं हॉस्पिटलाइज हैं, तो अगर कुछ होता है सीन, तो शायद अगर आना हो तो बताऊंगा वैसे तो, लेकिन हाँ। और अपना अपनी हेल्थ अपडेट रखियो, नहीं करो, नहीं, बिल्कुल। बताते रहियो। अरे 100% आ रहा हूँ, मैं बताऊंगा इस बार, जरूर मिलेंगे। लास्ट टाइम आए थे हम लोग, थोड़ा ऐसा रूटीन फैला हुआ था, कुछ हो नहीं पाया था, सब एकदम हाँ। रहता था सब तरफ, तो लेकिन इस अब बार तो हो करते हैं। चुका है, अब तो फिर से नहीं होएगा ना। अब तो फुल ऑन ऐश मारेंगे, ठीक है? कोई नहीं, कोई नहीं, टेंशन मत स्कोर लो। करेंगे, ठीक है? 100 100%। ओके भाई,
Take care. ओके बड़ी, टेक